This session is being recorded, and this is Sir Sibu Rahman, your English language and IELTS instructor. And today we have another special episode on सिंटेक्स। सिंटेक्स का ही खानदान चलता हुआ आ रहा है। हमने कल बात करी थी सेंटेंस फॉर्मेशन के ऊपर कि जब हम कोई सेंटेंस क्रिएट करते हैं तो हमारे सामने चार चीजें आती हैं: सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस एडवर्ब। हमने कल एडवर्ब और वर्ब के रिलेशन को समझने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी। मेरे कल 3 सेशंस थे आपके साथ, सुबह में 10 से 11, दोपहर में 3 से 4, रात में 7 से 8। आज भी मेरे आपके साथ 3 सेशंस हैं और उन्हीं बातों को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। और फिर आज का जो एक बड़ा अहम टॉपिक है वो आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जिस पे हम बात करेंगे आपका। उसके बाद थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स को। लेकिन सबसे पहले जो एडवर्ब्स आप लोग याद कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है अभी तक आप लोगों ने याद नहीं किया होगा, याद कर लीजिएगा। आपको बहुत काम आने वाला है कि कौन सा एडवर्ब किस सिचुएशन में आता है। आज मैं सबसे पहले आपके जहन में ये बात बिठा रहा हूं कि देखें एडवर्ब की प्लेसमेंट क्या क्या हो सकती है। आप एडवर्ब को सेंटेंस के आखिर में ले जाइए। सर हसीब टीचर्स अस एवरी डे। आप एवरी डे को शुरू में ले आइए। एवरी डे सर हसीब टीचर्स अस। अगर शुरू में लेकर आएंगे तो ख्याल रखेंगे कैपिटलाइजेशन और कॉमा लगाइए, वरना फिर आप इसको सब्जेक्ट के बाद ले आइए। सर हसीब एवरी डे टीचर्स अस। इन तीनों सिचुएशन में एवरी डे आपके सेंटेंस पे सूट कर रहा है। Sometimes she calls me, she calls me, sometimes she sometimes calls me। आप समटाइम्स को जुमले के आखिर में ले जाइए, शुरू में ले आइए, सब्जेक्ट के बाद ले जाइए। तीनों जगह पर ये सूट करता है। ज्यादातर एडवर्ब्स ऐसे ही बर्ताव करते हैं कि यूजुअली के साथ भी ऐसा ही है, नॉर्मली भी ऐसा ही है, यस्टरडे भी ऐसा ही है, फ्रीक्वेंटली भी ऐसा ही है कि आप इसको जुमले के आखिर में रखें, जुमले के शुरू में रखें, सब्जेक्ट के बाद रखें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन कुछ एडवर्ब्स बेटा ऐसे होते हैं, जैसे कि आपके सामने भी आ रहा है, ऑलवेज और नेवर। इनकी प्लेसमेंट को कोशिश किया करें कि सब्जेक्ट के बाद ही रखें बस, और इनको कहीं मत लेकर जाएं। तो हर एडवर्ब की लोकेशन को बदलने का मशवरा भी गोरा आपको नहीं देता है कि जहां दिल चाहे लगा लो। जैसे नेवर, शी लव्स मी नेवर, अजीब सा है। शी कॉल्स मी नेवर, नेवर शी कॉल्स मी, अजीब सा लग रहा है। ज्यादा सबसे ज्यादा जो अप्रोप्रिएट है वो कौन सा है? शी नेवर कॉल्स मी। तो नेवर और ऑलवेज की प्लेसमेंट को बदलने की जरूरत नहीं है। ये जुमले के शुरू में सुना जा सकता है अगर कोई इंपेरेटिव सेंटेंस आप बनाते हैं, जैसे नेवर कॉल मी अगेन, ऑलवेज टेक ब्रेकफास्ट अर्ली, नेवर कम हियर, नेवर नेवर स्पीक इन उर्दू, ऑलवेज वर्क हार्ड। तो ये आपको शुरू में मिल जाते हैं, बट दे आर इंपेरेटिव सेंटेंसेस। मेरा आपसे एक सवाल, क्या हम एडवर्ब के बगैर जुमला बना सकते हैं? तो कल की बात है, आपने कहा बिल्कुल सर बन सकता है। इट इज पॉसिबल टू क्रिएट अ सेंटेंस विदाउट एन ऑब्जेक्ट। क्या हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बगैर और एडवर्ब के बगैर, दोनों के बगैर जुमला बना सकते हैं? तो कल की बात हुई थी, जी बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या सब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है? कल तो हमने कह दिया था हाँ बन सकता है, लेकिन आज उस पर थोड़ी सी डिटेल आपके पास आ रही है। कॉल सारा नाउ, इसमें कोई सब्जेक्ट दिख रहा है? कैन यू सी एनी सब्जेक्ट? कॉल सारा नाउ, किल हर राइट नाउ, ओपन द डोर नाउ, डोंट कॉल हिम टुनाइट। देखिए कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा, बजाहिर हमें कोई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा, लेकिन ये कह देना कि सब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है, तो ये बात गलत हो सकती है। क्योंकि देखो बेटा, गौर से देखो, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हेल्प मी, कॉल हर, डोंट नॉक एट द डोर, डोंट डिस्टर्ब मी, कॉल सारा। मेरी जबान पर अभी भी कोई सब्जेक्ट नहीं आया, कॉल सारा, लेकिन मेरी आंखों में आ गया, नजरों में आ गया है, दिमाग में भी आ जाएगा कि सब्जेक्ट के बगैर कोई सेंटेंस नहीं बनता। कौन सारा, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट है तो, लेकिन इस्तेमाल नहीं करते।
इम्पेरेटिव सेंटेंस की मुकम्मल डेफिनेशन आज आप लोग पहली मर्तबा शायद सुनेंगे, लिखना चाहें तो लिख लीजिए। In imperative sentence, we don't use subject because it is definite, because it is obvious. In imperative sentence, subject is usually hidden because it is obvious. Imperative sentence के अंदर जो subject होता है वो छुपा हुआ होता है। Imperative sentences के अंदर जो आपका subject होता है वो छुपा हुआ होता है, उसमें उसका इस्तेमाल आप नहीं करते। लिसन टू मी, बात सुनिए मेरी। जी बोलिए भाई। टॉक टू मी। हाँ हाँ, आप ही से बात कर रहे हैं भाई। स्टैंड अप। आप स्कूल में पढ़ा रही है बच्चों से, सामने आपका एक बच्चा है जिससे आप बात करें। स्टैंड अप। आप जिस बच्चे से मुखातिब है आप बस उसको इतना भी कह दें, स्टैंड अप, थैंक यू वेरी मच, कोई सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखो, सब्जेक्ट जब आएगा जब आपको गुस्सा आएगा। तू चुप रहे भाई। तुम दफा हो जाओ एक कमरे से। तुम दफा हो जाओ एक कमरे से। तुम मेरी बात सुनो। यू मिस्टर, हाँ तुम इधर आओ। तुम खड़े हो जाओ। गुस्सा आ रहा है आपको। जब आपको गुस्सा आता है तो आपकी जबान पर यू आता है। यू शट अप। यू गेट लॉस्ट। यू स्टैंड अप। यू इडियट। हमारे स्कूल की मिसों के जुमले। यू स्टैंड अप। यू स्टूपिड। यू गेट लॉस्ट। यू गेट आउट फ्रॉम द क्लास। गुस्सा आ रहा है आपको, जब गुस्सा आता है तो यू आ जाता है। जब गुस्सा आता है तो यू आ जाता है, और जब ससुराल वाले आते हैं तो आपकी अब्बा की जबान पे भी यू आ जाता है। अरे आप लीजिए ना। लीजिए, आप लीजिए। आप लीजिए ना। यू जस्ट हैव सम कबाब्स। यू जस्ट हैव समथिंग मोर। कुछ और लीजिए ना भाई। बेटा आपने तो कुछ लिया ही नहीं है। बेटा आप तो कुछ लो ना। जी अंकल मैं अभी लेता हूँ। आप तो खा ही नहीं रहे बेटा। यू जस्ट हैव समथिंग। ये गुड़िया ने अपने हाथों से बनाया बेटा। सारा माल केएनएस का है और गुड़िया ने अपने हाथों से बनाया। यू जस्ट हैव समथिंग। सर बात तो सुन ले सर। यू जस्ट लिसन टू मी सर, प्लीज सर। सर प्लीज एक्सेप्ट माय प्रेजेंटेशन सर, प्लीज सर। सर यू जस्ट लिसन टू मी सर। ये क्या कर रहे हैं आप टीचर को आमादा कर रहे हैं। आजकल का बच्चा ऐसा नहीं होता है। आजकल का बच्चा कहता है ठीक है, सोच ले, फिर सोशल मीडिया पे आपके खिलाफ मुहिम चल जाएगी। फिर वो टीचर डर जाता है। कि आजकल तो मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं, मेरे पास शायद इस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद फीमेल्स की है। प्लीज डोंट अपलोड योर पिक्चर्स ऑन फेसबुक। डोंट इवन सेंड योर पिक्चर्स टू योर फ्रेंड्स। अब जो एआई आ गया है ना, एआई, एआई, मैंने उस एआई की पिक्चर से एक तजर्बा किया। दो लोग खड़े हुए थे, मैंने उनको गले मिलवा दिया। आपकी ऐसी वीडियो बन जाएगी, आप सोच से आपकी बाहर। आप पिक्चर भी अपलोड ना करें प्लीज। आपकी पिक्चर को किसी और पिक्चर के साथ आप जोड़ना कोई मसला नहीं है। आपने एक बहुत बहुत महज़ब तस्वीर खिंचवाई है, लेकिन वो तस्वीर अब एक ऐसा एआई का टूल आ गया है कि आप उसको सिर्फ वो कमांड दे दें। मैंने सिर्फ लिखा नाउ दे आर हगिंग, मतलब गले मिल रहे हैं। आप यकीन करें वो दोनों गले मिल गए। अच्छा मैंने बच्चों की तस्वीर खींची, तीनों बच्चों की। मैं कहा तीनों खड़े हो जाओ। मैंने तीनों को तस्वीर खींच के मैंने एआई के टूल को कहा दे आर फाइटिंग। तो आप यकीन करें नाउ दे आर फाइटिंग। वो तस्वीर को उसने इस तरह से एडिट कर दिया और वीडियो बनाकर दे दी मुझे। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल। अब एआई ऐसा खतरनाक टूल आ गया है जिसका बहुत गलत इस्तेमाल अभी हमारी आवाम करेगी, क्योंकि आपको पता है ना पाकिस्तान की आवाम पॉजिटिव तो कोई काम करती नहीं है, नेगेटिव काम करती है। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे सियासतदानों के ऊपर वो सिर्फ मुलाकात कर रहे हैं। अगर आप रियल वीडियो देखें या पिक्चर देखें तो वो सिर्फ मुलाकात के लिए खड़े रहे हैं। उनके इस्तकबाल के लिए उन्होंने गले मिलवा दिया। वो बाहर से एम्बेसडर आ रहे हो, जाके गले मिल गई। तो दैट्स वेरी स्केरी एंड दैट्स वेरी अलार्मिंग। सो प्लीज बी केयरफुल। डोंट अपलोड योर पिक्चर्स। डोंट सेंड योर पिक्चर्स टू एनीवन। आपको नहीं पता आपकी पिक्चर्स के साथ क्या हो जाएगा।
अब तो हो सकता है, अब बहुत आसान हो गया है, पहले बहुत मुश्किल था, अब हर कोई कर सकता है, सिर्फ एक एआई को एक कमांड देनी है। अच्छा भाई, अली, अली बेटा, स्विच ऑफ द लाइट। अली, अब देखो यहां पर यू का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन यू लिखा हुआ है। अली, स्विच ऑफ द लाइट। अली कम्स ऑन टाइम। अच्छा, अगर एक एस ना लगाए और एक एस लगा दे तो उससे क्या फर्क पड़ता है? देखो, अली वक्त पर आया कर भाई, कैसे बोलेंगे? अली वक्त पर आया करो, अली वक्त पर आया करो, एस लगेगा। अली वक्त पर आया करो। आज भी दोपहर में भी सो रही है, सुबह भी सो रही थी हमारी आवाम, दोपहर में भी सो रही है, जागते कब है आप लोग? No, sir. अब Ali, come on time. अली कम ऑन टाइम, अली वक्त पर आया करो। अगर मैं कहूं अली वक्त पर आता है, Ali comes on time. अब आप एस लगा देंगे, देख लें, अली कम्स ऑन टाइम, सिर्फ एक एस लगा दे और हटा दे, जुमले का मतलब ही बदल जाता है। सारा लिसन टू मी, हाथ छोड़ो मेरा। सारा लिसन टू मी, एवरीबॉडी इज लुकिंग एट अस, व्हाट आर यू डूइंग? लीव माय हैंड। सारा लिसन टू मी। अब सारा लिसन टू मी का मतलब क्या है? सारा मेरी बात सुनो। लेकिन अगर मैंने एस लगा दिया तो उसका मतलब क्या होगा? सारा लिसन्स टू मी। सारा लिसन्स टू वो मी। भी सुनती है। सारा मेरी बात सुनती सारा है। सुनती है। ठीक है ना? तुम चुप रहो। जी सर, आपने पूछा तो मैंने बोला। यू शट अप, यू कीप योर माउथ शट, यू म्यूट योर सेल्फ। गुस्सा आ रहा है सर को, जब गुस्सा आएगा तो यू आएगा। और जब आप किसी को आमादा करना चाहते हैं, परसुएट करते हैं, परसुएट का मतलब आमादा करना, तो आप यू का, सर आप बैठिए तो सही, आप सुनिए तो सही, यू जस्ट लिसन टू मी, यू जस्ट हैव अ सीट, यू जस्ट लिसन टू मी फॉर 5 मिनट्स। उसके बाद जो आपका दिल चाहे वो आप कर लीजिएगा, यू जस्ट लिसन टू मी। आ गई बात समझ? अच्छा, अब इसके अंदर एक गड़बड़ और है। मेरा एक सेंटेंस है उन तमाम स्कूल की टीचर से जो स्कूल में पढ़ाती रही हैं। आप बच्चों को एक जुमला बोलती थी, याद करें। बातें मत करो। क्या बोलते थे? बातें मत करो। बनाओ बनाओ, टेंशन नहीं लो यार। डोंट स्पीक। डोंट टॉक। डोंट Don't स्पीक। talk. Don't डोंट, talk. शोर मत बजाओ। Don't shout. डोंट शाउट, डोंट डोंट मेक अ नॉइज। डोंट मेक अ नॉइज। अच्छा, एक जुमला और भी है। तुम बातें मत करो। अब एक बच्चे में गुस्सा आ रहा है आपको, तुम बातें मत करो, यू तुम खड़े डोंट मत। मेक अ Don't, यू डोंट टॉक, डोंट स्पीक यू डोंट या यू शाउट, डोंट टॉक। यू डोंट टॉक, यू डोंट मेक अ नॉइज, यू डोंट स्टैंड अप। तुम खड़े मत हो, यू डोंट स्टैंड अप। ओके मिस, यू डोंट शाउट। यही बोलते थे जुमले, सच्ची मुच्ची यही चलते थे ना, याद कर लें। आप नहीं बोलते थे, आपके यस टीचर सर। यही बोलते थे। यू डोंट टॉक, यू डोंट मेक अ नॉइज, यू डोंट शाउट। हम यू को पहले ले आते थे, यू डोंट शाउट, और ये सही भी लग रहा है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। यू डोंट शाउट, यू डोंट शाउट, यू डोंट शाउट। जुमला सही है गलत है? यू डोंट शाउट सही है। जुमला गलत है। क्या बात कर रहे हो भाई? जुमला बिल्कुल गलत है आपका। यू डोंट शाउट। सर कैसे? अब आज के बाद आप इसकी फॉर्मेशन को चेंज कर दें, पहले डोंट लगेगा। तुम चिल्लाओ मत, डोंट यू शाउट। तुम मत जाओ, डोंट यू गो। तुम इसको हाथ मत लगाओ, तुम इसको हाथ मत लगाओ। बनाइए। डोंट यू टच हिम। Don't you touch it. डोंट यू टच इट। तुम जुर्रत नहीं करना मुझे हाथ लगाने की, हाथ काट दूंगी मैं तुम्हारे। डोंट Don't यू touch me. डेयर। डोंट There. डेयर टू टच मी, आई विल कट योर हैंड्स। क्यों, तुम्हारे अब्बा कसाई है? हाँ, हम कसाई के खानदान से, लेकिन तुमने तो कहा तुम्हारे अब्बा का कारोबार है। हाँ, हमारे अब्बा का कारोबार है, 4 दुकानें, तीनों भाई मेरे कसाई है। अच्छा यार, चले। अच्छा, तुम बीच में मत बोलो, बीच में बोलना Don't इंटरप्ट। you speak interfere. डोंट यू इंटरप्ट, डोंट यू इंटरप्ट।
मुदाखलत, तुम मुदाखलत मत करो। डोंट यू इंटरप्ट। In. डोंट Inter. इंटरप्ट। तुम यहां मत बैठो। तुम यहां मत बैठो। Don't you sit here. डोंट यू सिट हियर। Don't आज You के sit बाद here. आज के बाद जुमला दिमाग में ये आएगा, तुम यहां मत बैठो। तुम यहां मत don't you बैठो। sit लेकिन here. डोंट यू लेकिन सर सिट। जब आप एक बंदे से मुखातिब हैं तो फिर आपने यू का लगाना, नॉर्मल लाइफ में तो नहीं यूज होता है ना। हम डोंट यू यू सिट भी हियर, लगाते हैं हम जब हम सिंपल। किसी एक से गुस्सा होते हैं। हम अभी तो हमारी जो टोन है वो गुस्से वाली चल रही है ना, हम एक ही इंसान हाँ, से बात कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मल लाइफ में तो यही स्पेशली कहते हैं ना, प्लीज सिट डाउन। वो तो अगर कोई आप, एक बंदा है। अब आप किसी से मुखातिब हैं, Polite way. अब आप इस तरह से, अगर आपकी सिचुएशन है, आप लोग यहाँ ना बैठे, जैसे आप जनरली आप लोग मुखातिब हैं, आप यहाँ ना बैठे। डोंट सिट हियर। आप यू का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन जब आप यू का इस्तेमाल करते हैं तो आपका जुमला बनता है गलत। आप लोग कहते हैं यू डोंट सिट हियर, यू डोंट टॉक टू मी। तुम मुझसे बात मत करो। तुम मुझसे बात मत करो, बताइए कैसे बनाएंगे। तुम मुझसे बात मत करो। आप लोग, प्रॉब्लम ये है जब यू लगता है तो आपकी फॉर्मेशन गलत होती है। आप लोग यू से उठाते हैं जुमला, जबकि मैंने आपको क्या सिखाया, आप कहां से उठाएंगे अब। तुम बात मत करो। Don't. तुम मुझसे बात डोंट मत यू करो। स्पीक डोंट यू डोंट यू टॉक। स्पीक विद मी डोंट यू डोंट टॉक यू विद टॉक मी। टू मी। तो Don't क्या, you talk to क्या हो me. गया, क्या हो गया, क्या हो गया। डोंट यू टॉक टू मी। अरे सर बताएं तो क्या हो गया, बात बोल दिया ना, डोंट यू टॉक टू मी। बताएं तो सर, मतलब है क्या हो गया सर। डोंट यू, डोंट यू गो। तुम मत जाओ, मैं तो जाऊंगा, सारे दोस्त जा रहे हैं। डोंट यू गो, तुम मत जाओ। डोंट यू गो। अच्छा, आप अब देखें, ये तीन सेंटेंसेस नजर आ रहे हैं आपको। डोंट यू स्टैंड अप, डोंट यू टॉक टू मी, डोंट यू गो। इन तीनों सेंटेंसेस को अगर मैंने कॉपी किया और एक दफा पेस्ट किया, और यहां से मैंने इसको एंग्री टोन हटा दी है, और मैंने मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन की जगह पर क्वेश्चन मार्क चिपका दिया, तो अब तो मेरे हालात ही बदल गए। अब मेरी टोन बदल जाएगी। तुम मुझसे बात नहीं करते हो, क्या हो गया। तुम बात करती हो मुझसे, मैं थोड़ी नहीं करता। एक ही बात है ना, मतलब मैं तुमसे बात करूँ या तुम मुझसे बात करो, फोन तुम करती हो ना, मैं थोड़ी नहीं करता। डोंट यू टॉक टू मी, क्या तुम मुझसे बात नहीं करते हो। डोंट यू स्टैंड अप, क्या तुम खड़े नहीं होते हो। डोंट यू गो, क्या तुम जाते नहीं हो। अब तो ये नेगेटिव क्वेश्चन बन गया। फॉर्मेशन सेम है, सिर्फ किसका डिफरेंस आया है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन और क्वेश्चन मार्क और आपकी टोन। क्या तुम चिल्लाती नहीं हो, कैसे बनाओगे। क्या तुम चिल्लाती नहीं हो। Don't you shout. डोंट यू शाउट, क्या तुम चिल्लाती नहीं हो। तुम चिल्लाओ मत। डोंट शाउट ऑन मी तुम चिल्लाओ मत। डोंट शाउट। तुम Don't you तुम shout. डोंट यू शाउट, डोंट यू Shout. शाउट, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तुम चिल्लाओ मत। चिल्लाऊंगी, और चिल्लाऊंगी, जोर जोर से चिल्लाऊंगी। आ गई बात समझ। अब आप देख रहे हैं दोनों में डिफरेंस महसूस हो रहा है, दोनों जुमले। अच्छा, अब आप देखिए, सर ने अभी कहा था ये जुमला गलत है। यू डोंट शाउट, सर ने कहा था ये जुमला गलत है। मैं कहता हूं ये भी सही है। मैं कहता हूं ये भी सही है। यू डोंट टॉक टू मी, सर ने कहा था अभी ये जुमला से गलत है। मैं कहता हूँ ये भी सही है। सर सोच रहे, मतलब ही कुछ और है इस जुमले का। यू डोंट शाउट का मतलब क्या है, यू डोंट शाउट का मतलब बताना है, अगर ये सही है तो। ये एक सिंपल नेगेटिव सेंटेंस है। क्या मतलब, तुम नहीं चिल्लाते हो। ये चीज मेरे अजीज, तुम चिल्लाती नहीं हो। यू डोंट शाउट, मैं क्यों चिल्लाऊं, देखिए मुझे चिल्लाकर क्या मिलेगा, मैं एक ही दफा जान से मार दूंगी। यू डोंट शाउट। यू डोंट टॉक टू मी, क्या मतलब,
तुम मुझसे बात नहीं करते। तुम मुझसे बात नहीं करते हो, तुम मुझसे बात नहीं करती हो। लेकिन अगर मैं कहूं यू डोंट टॉक, सिंपल इतना लिख देता हूं, यू डोंट टॉक, तो आपको फिर मेरी और बात समझ आएगी। यू डोंट टॉक, तुम बात नहीं करते हो। तुम बात मत करो, मना किया ना बात करने से। तुम बातें मत करो तुम। अब कहां से उठाओगे? कमांड अब जुमला कहां से उठेगा? Don't बस सर, डोंट यू टॉक। और इसको कहते हैं नेगेटिव इम्पेरेटिव। क्या कहते हैं? नेगेटिव इम्पेरेटिव। नेगेटिव इम्पेरेटिव। ये कमांड है, ऑर्डर है। तुम बात मत करो। और अगर मैं नेगेटिव क्वेश्चन बना दूं, जैसे मैंने कहा डोंट यू टॉक, तो ये कहलाता है नेगेटिव क्वेश्चन। नेगेटिव क्वेश्चन से मुराद, बनाओ अब उर्दू बताओ। नेगेटिव क्वेश्चन, डोंट यू टॉक। तुम मुझसे तो बात नहीं कर रहे। क्या तुम बात नहीं करती हो? डोंट यू टॉक। नहीं, मैं बात नहीं करती हूँ, मैं अजनबियों से बात नहीं करती हूँ। अच्छा। अच्छा, एक और देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल फौलादी हो जाए। बताइए इसका मतलब क्या है? यू कम। अगर मैं और इसके आगे मैं लिख देता हूं प्रेजेंट सिंपल, तुम इसका आते हो। तुम आते हो। यू कम ऑन टाइम, मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूं। यू कम ऑन टाइम, तुम वक्त पर आते हो। आओ। अच्छा, अब देखिए, यही यही सेंटेंस होगा। टोन बदलेगी, टोन बदलेगी। फुल स्टॉप की जगह पर हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे। प्रेजेंट सिंपल की जगह पर हम आपके सामने लिख देंगे एंग्री। अब एंग्री मोड में है, और ये फिर अब प्रेजेंट सिंपल नहीं होता, ये इम्पेरेटिव हो जाता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब बताओ इस सेंटेंस का मतलब। यू कम ऑन टाइम, तुम वक्त पर आओ। तुम वक्त पर इस तरह आओ होगा भाई। फिर। वक्त पर आओ, तुम्हारे अप्पा का ऑफिस नहीं है? जी सर। यू कम ऑन टाइम, तुम वक्त पर आया करो भाई। जी सर। ओके सर। सॉरी सर। मतलब बताओ। मैंने आगे लिख दिया, ये है नेगेटिव क्वेश्चन। तुम लेट मत आओ। नहीं, नेगेटिव क्वेश्चन। डोंट यू कम। नेगेटिव क्वेश्चन। तुम लेट क्यों नहीं आते? क्या तुम देर से क्या नहीं तुम आते लेट हो? नहीं? आगे से याद रहेगा, ये जो नेगेटिव क्वेश्चन लिख रहा हूं ना, इससे याद रखो। क्या तुम देर से नहीं आते हो? सवाल है ना। और अगर मैं बिल्कुल यही डिट्टो छाप दूं और आगे मैं लिख दूं नेगेटिव इम्पेरेटिव, तो अब बताओ। और ये आपका क्वेश्चन मार्क बदल जाएगा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन में। डोंट यू कम लेट, डोंट यू कम लेट नेक्स्ट टाइम। देर से क्यों आते हो? नहीं, वाई तो मैंने लिखा ही तुम नहीं है। देर से क्यों आते हो? वाई तो लिखा ही नहीं है। वाई की मीनिंग देर से आते हो। देर से आइंदा मत लेट आया मत करो। आना। देर से मत देर आओ। से आते हो। तुम देर से आते हो। डोंट तू देर यू से आते कम लेट। देर से मत आया करो। देर से देर मत से आओ। मत आना। देर से मत आना। तुम देर से मत आना। घर की मासी को आप किस तरह से बात करती हैं? तुम जरा रशीदा कल देर से मत आना। जी बाजी, मैं कोशिश करूंगी, मैं वक्त पे आ जाऊं। रोजाना के तुम्हारे यही बहाने होते हैं। आज गैस नहीं दिया, आज बच्चा बीमार था, पता है ना कल घर में दावत है। कल तुम देर से मत आना। डोंट यू कम लेट टुमारो। जी बाजी, मैं सुबह 7 बजे आ जाऊंगी। नहीं, अब इतनी जल्दी भी मत आना। हो। किसी हाल में कुछ नहीं, हमारे घर की महिलाएं। चले भाई, आ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोग एक कॉन्सेप्ट याद रखें। अगर यू लगकर आ गया, प्रेजेंट सिंपल भी हो सकता है। यू लगकर आ गया, आप गुस्से में भी हो सकते हैं।
आपने कह दिया डोंट यू कम लेट, ये नेगेटिव क्वेश्चन भी हो सकता है। सर ने कहा है ये जुमला नहीं हो सकता, यू डोंट कम लेट। आप नेगेटिव इंपेरेटिव ऐसे नहीं बना सकते। नेगेटिव इंपेरेटिव को बनाने का ये तरीका गलत है, तो मैं इसको लिखकर मैंने काट दिया। तो सही तरीका क्या है भाई साहब? सही तरीका ये है, सही तरीका ये है। लेकिन फिर एक जगह पर सर कहते हैं कि ये जुमला सही है। पागल हो गए सर, यू डोंट कम लेट, ये जुमला सही है। लेकिन अब सर ने लगाया फुल स्टॉप और आगे लिखा कि ये प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव है। आपने देखा एक जुमला कितना दिमाग की दही करता है आपका। आप कहते हैं हमें बेसिक्स आती है, बेसिक बिल्कुल नन्ना सा सेंटेंस है ये जो आपके दिमाग को घुमा रहा है। यू डोंट कम लेट, इस जुमले का मतलब बता दें, ये सही है, ये फॉर्मेशन सही है, ये प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव है। यू डोंट कम लेट, आई नो यू डोंट कम लेट, क्या मतलब? यू डोंट कम लेट, देर से नहीं आते, मुझे पता है। तो देर से नहीं आते हो। मिसेस वकार, छा गई आप। यू डोंट कम लेट, मुझे आई नो यू डोंट कम लेट, दे आर लाइंग, वो झूठ बोल रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मैंने सारी कहानी आपके साथ यहाँ लिख दी, इसको नोटबुक में लिख लीजिएगा, क्योंकि आज के नोट्स में पीडीएफ बनाकर आपको ऑलरेडी फॉरवर्ड कर चुका हूं। अब आप उसमें ऐड कर लीजिएगा अपने पास, ठीक है? गॉट इट? चले आगे। एक सेंटेंस में सवाल का ये था कि क्या सब्जेक्ट आ सकता है। अब मेरा आपसे सवाल है, बताइए क्या एक सेंटेंस सब्जेक्ट के बगैर बन सकता है? इज इट पॉसिबल टू क्रिएट अ सेंटेंस विदाउट अ सब्जेक्ट? तो आपका जवाब होगा नो नहीं। सर। We नो cannot सर। create any sentence without a subject. हम सब्जेक्ट के बगैर कोई सेंटेंस विदाउट क्रिएट सब्जेक्ट। नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो हाइड हुआ हुआ हो, छुपा हुआ हो, लिसन टू मी, टॉक टू मी, वर्क हार्ड, लेकिन जब आप उसका सिटी स्कैन करेंगे, जब आप उसकी ब्लड रिपोर्ट देखेंगे, तो आपको यू नजर आएगा। ठीक है? गॉट इट? चलिए, क्या एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं? कल की बात है, कल मैंने आपको एक यस बात सर। पूछी थी यस और आप यस सर। सर, आते हैं सर। यस। जी, और उस पर आज बहुत तफसीली गुफ्तगू हम करने जा रहे हैं। जी सर, बिल्कुल, एक सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं। अगर एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं तो उसका बाकायदा गोरे ने नाम रखा है, और उसका नाम है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफर्स टू समथिंग और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफर्स टू समबडी। समथिंग और समबडी को समझने के लिए मैं घर में दाखिल हुआ, मेरे हाथ में सिगरेट का डब्बा था, मैंने जेब में रख लिया। एकदम अब्बा ने देख लिया, वहां से बहन ने देख लिया। बहन चिल्लाई, बाबा, ही हैज समथिंग इन हिज पॉकेट, ही हैज समथिंग इन हिज पॉकेट। हम ये तो नहीं कह सकते ना ही हैज समबडी इन हिज पॉकेट। समथिंग से मुराद कोई चीज हो सकती है, कोई जानवर हो सकता है, कोई चीज हो सकती है, कोई जानवर हो सकता है। आप चिड़ियाघर गई, चिड़ियाघर में आपने एक केज देखा, पिंजरा देखा, आपने कहा देयर इज समबडी। अब आपका मतलब क्या है भाई? देयर इज समबडी, जो वहां के केयर टेकर होते हैं, जू कीपर्स होते हैं, केयर टेकर्स आप उनको कह सकते हैं, तो जो रखवाली करते हैं। तो देयर इज समबडी, वो खाना वाला कोई डाल रहा था, आपने कहा देयर इज समबडी इन द केज, देयर इज समबडी इन द केज। बाद में पता है वो आदमी उस पिंजरे में ही होता है, फिर बाहर तख्ती पड़ी, आपने लिखा शादीशुदा आदमी। देयर इज सम, देयर इज समबडी इन द केज, ही हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम आफ्टर गेटिंग मैरिड। फिर और आगे आप चले गए, फिर आपने देखा वहां कोई शेर था, देर, लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा, आवाज आ रही है, देयर इज समथिंग, देयर इज समथिंग इन दिस केज, देयर इज समथिंग इन दिस केज। कोई चीज, अब आप किसी जानवर की बात कर रहे हैं, देयर इज समथिंग। आपने शर्ट इस्त्री करके पहनी और थोड़ी देर आपने उसको कहीं रख दिया था, फिर आपने एकदम से पहनी तो आपको कुछ महसूस हुआ। होता है ना कभी कभार, यू मे हैव एक्सपीरियंस्ड अ कॉकरोच इनसाइड योर शर्ट और अ लिजर्ड इनसाइड योर शर्ट। आई हैव एक्सपीरियंस्ड बोथ।
तो फिर आपको महसूस होता है यार देर इज समबडी इनसाइड या देर इज समथिंग इनसाइड, क्या कहेंगे? समथिंग। देर इज समथिंग। तो आप कोई भी जानवर होता है, देर इज समथिंग इनसाइड, प्लीज वेट, आई विल बी बैक इन अ मोमेंट। आपको घर में किसी के घर गई, आपने बेल बजाई, नोबडी इज ओपनिंग द डोर, अब आप क्या कहेंगे? इज समबडी एट होम या इज समथिंग एट होम? समथिंग। इज somebody, समबडी होम? सम इज सम yes, समबडी। आप फिर आपने somebody कहा is लाइट तो home, खुली हुई है, somebody is home. समबडी इज इनसाइड, somebody is inside। सामने वाले गए हुए थे छुट्टियों पर मरी, लेकिन आपको ना कुछ लोगों के चलते फिरते हुए लोग नजर आ रहे हैं रात में ना, लाइट खुली हुई है। तो आपने कहा somebody is in their home, somebody is in their home, कोई है उनके घर में। फिर आपने उनको फोन किया, रशीदा आंटी को, यार आपके घर पे कोई है? नहीं भाई, हमारा घर तो खाली है, लेकिन लाइट जल रही है और दो चार लोग मुझे नजर आ रहे हैं। क्या बात कर रही हो बहन? हाँ, मतलब गानों की आवाज भी आ रही है। अच्छा, होता है, जिन ने देखा होगा, जिन्होंने भाई घर खाली है, चलो थोड़ी पार्टी करते हैं। देयर इज समबडी देयर आर सो मेनी पीपल इन योर होम। सो समबडी रेफर्स टू इंसान, समथिंग रेफर्स टू जानवर, याद रखिएगा। और या फिर कोई चीज, आपको वॉशरूम में से आवाजें आ रही है रात के 3 बजे, आपने कहा somebody इज इनसाइड, और somebody इज इनसाइड या समथिंग इज इनसाइड। आपने बच्चों के कमरे में जाके देखा, चारों बच्चे सो रहे हैं, सास ससुर के कमरे में वो दोनों भी सो रहे हैं। अब आपने कहा समथिंग इज इन द वॉशरूम। गए तो आपकी बिल्ली जो है वो वॉशरूम में नहा रही थी। सो समथिंग, अब समथिंग इज इन द वॉशरूम। आप समथिंग भी कह सकते हैं, अब आप somebody भी कह सकते हैं, क्योंकि वो दोनों का होना पॉसिबल हो सकता है। somebody इज इन द वॉशरूम। तो समथिंग, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है समथिंग को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सम वाई समथिंग, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों कहा जाता है, सवाल ये है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों कहा जाता है, सवाल ये है। कल आप लोग नेक्स्ट एपिसोड में आप मेरे साथ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को स्टडी करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट बेसिकली रिसीवर ऑफ एन एक्शन होता है। रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। मेरे हाथ में एक फूल है, मैं अगर वो फूल सारा को दे रहा हूं, तो बताओ मेरा एक्शन डायरेक्ट पहले कौन रिसीव करेगा, समबडी या समथिंग? आई गिव अ रोज, तो मेरे एक्शन को रिसीव किसने किया सबसे पहले? समथिंग ने। इनडायरेक्टली कौन रिसीव करेगा? इनडायरेक्टली कौन रिसीव करेगा? समबडी। तो हमेशा याद रखिए, जो समथिंग होती है वो आपके एक्शन को डायरेक्ट रिसीव करता है, और समबडी जो होता है वो इनडायरेक्ट रिसीव कर रहा होता है। और ये शॉर्ट फॉर्म्स याद कर ले, STH और SB, और ये गोरे ने शॉर्ट फॉर्म्स बनाकर दिए। अगर आप समथिंग को पहले लिखेंगे तो आपको टू लगाना है या फिर फॉर लगाना है। अगर somebody को पहले लिखेंगे तो ये टू और फॉर की झंझट से आप बच सकते हैं। somebody समथिंग, आई लाइक somebody होगा या आई लाइक समथिंग होगा? बोथ। both दोनों are correct. दोनों हो सकते हैं। आई लाइक सारा, आई लाइक चॉकलेट। आई टीच somebody होगा, समथिंग होगा? somebody, आई दोनों आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश somebody है। आई टीच इंग्लिश भी हो सकता है, आई टीच सारा भी हो सकता है। somebody और something। आई वॉन्ट somebody something, आई वॉन्ट सारा, आई वॉन्ट चॉकलेट, दोनों हो सकते हैं। both, yes, दोनों, बोथ बोथ आर पॉसिबल। अच्छा, somebody को somebody disturbs me या something disturbs me? both, दोनों हो सकते हैं। बोथ। मोबाइल मोबाइल डिस्टर्ब्स मी, सारा डिस्टर्ब्स मी, ठीक है ना? आई सॉ somebody या आई सॉ समथिंग? बोथ। दो, आई सॉ सारा, आई सॉ अ पिक्चर, अ मूवी, दोनों हो सकते हैं। आई आस्क अ क्वेश्चन, बताओ क्वेश्चन क्या है? so समथिंग। somebody, अ क्वेश्चन, आई आस्क समथिंग।
समथिंग। Some आई आस्क अली क्या है? somebody. somebody. आइए, somebody. अब कभी कभार ऐसा होता है कि हम जुमले को एक साथ ही बोल देते हैं। मैं अली से सवाल पूछता हूँ, कैसे बोलेंगे? I ask something to Ali. आई आस्क अ क्वेश्चन टू अली। अच्छा, ये जुमला बोल सकते हैं, आई आस्क अली क्वेश्चन। आई आस्क अली अ क्वेश्चन। इज दिस पॉसिबल? अजीब सा लग रहा है सर। बिल्कुल सही है, लेकिन कोई कोई परेशानी नहीं है। आई आस्क, आई गिव सादिया अ लेक्चर। आई गिव अ लेक्चर टू सादिया। बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट। आप somebody को पहले लाएंगे तो टू लगाने की जरूरत, फॉर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आई गिव सादिया अ लेक्चर, आप लेक्चर को इधर ले आएंगे यानी कि समथिंग को इधर लाएंगे तो टू लगाना पड़ेगा, या फिर फॉर। अकॉर्डिंग टू द वर्ब हम टू और फॉर का फैसला करते हैं। आई टीच अली, आई टीच इंग्लिश। इसको जोड़ के दिखाओ। दे दूं ऐसी एक्सरसाइज कि मैं दो जुमले लिख दूं, एक में somebody लिखा हो और एक में समथिंग लिखा हो, और आपको सिर्फ उन दो जुमलों को जोड़ना हो। जोड़ देंगे? I teach English to Ali. आई टीच अली इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश टू अली। दे दूं इस तरह की एक्सरसाइज बनाकर, एक में somebody लिखा और एक में समथिंग लिखा, और आपसे कहा जाए कि जरा इस सेंटेंस को जोड़ दी, एक साथ मर्ज कर दीजिए। तो मर्ज कर देंगे आप लोग, दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक साथ लिख देंगे। बस इसके Yes. लिए सिर्फ नॉलेज क्या होनी चाहिए कि somebody जब अगर पहले लिखेंगे तो आगे सिर्फ समथिंग आ जाएगा, अगर समथिंग को पहले लिखेंगे तो टू लगाना पड़ेगा। आई विल बाय यू अ कार। आई विल बाय यू अ कार। ये ज्यादा सुना है, या आई विल बाय अ कार फॉर यू? कौन सा For ज्यादा सुना? you. I will buy a car I for will buy you. a car for you. बोथ sentences are absolutely correct. I will buy you a car. I will buy a car for you. मैंने आपके लिए एक बकायदा पूरी लिस्ट जारी कर दी है। टू और फॉर के ऊपर बहुत सारे मैंने चीजें आपको ऐड करके दे दी है। आप इनको अपने फ्री टाइम में बैठ के याद करेंगे। देखिए मैंने क्या लिखा है। वर्ब प्लस समथिंग प्लस टू प्लस somebody, यानी कि वर्ब फॉलोड बाय समथिंग, उसके बाद टू, उसके बाद somebody। तो देखिए, गिव, शी गेव द कीज टू हर ब्रदर। सेंड दिस पार्सल टू माई आंट। मैं कहता हूं इसमें से टू हटा दो। कैसे? पहले वाले में हटाओ टू, पहले वाले में से शी गेव, somebody को पहले ले आओ। शी गेव, somebody को पहले ले आओ। She gives And somebody. person. शी गेव हर ब्रदर द कीज। आई विल सेंड दिस पार्सल टू माई आंट। इसमें से टू हटाओ। I will send this parcel my aunt. Sir, sense नहीं बन रहा है ना? आई विल सेंड माई आंट दिस पार्सल। आई विल सेंड माई आंट दिस पार्सल। सेंस तो फिर यहां पे भी नहीं बन रहा होगा। आई विल टीच यू पैसिव वॉइस। आई विल टीच पैसिव वॉइस टू यू। Both sentences are absolutely correct. He explained the problem to the technician. He explained the technician the problem, or a problem. The witness described the scene to the police. Witness described the police the scene. आप somebody को अगर इधर लेकर आएंगे तो टू अपने आप खत्म हो जाएगा। अगर आप समथिंग को इधर लेकर आएंगे तो टू लगाना पड़ेगा। ठीक है? गॉट इट? ये सारे वर्ब्स आपके साथ जा रहे हैं। इन वर्ब्स को आप याद करें। ये एक दिन में याद नहीं होंगे, दो दिन में याद नहीं होंगे। आपके पास नोट्स में डाटा होगा, तो जब आप रिवीजन करेंगे तो आहिस्ता 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 आपकी नॉलेज में मैंने डाटा काफी सारा इंसर्ट कर दिया है। सही है बेटा? फिर उसके बाद आपके पास वो वर्ब्स आ रहे हैं जो अपने बाद फॉर लेते हैं। देखिएगा इन वर्ब्स को। अब ये फॉर ले रहे हैं। आई बॉट फ्लावर्स फॉर मारिया। मारिया को इधर ले आइए, फ्लावर्स को आगे ले जाइए। आई बॉट फ्लावर्स फॉर मारिया।
मारिया को इधर ले आइए, फ्लावर्स को इधर ले जाइए, चेक करें। I bought Maria flowers. नहीं, सब I bought. फ्लावर्स सब लगा दे। आई बॉट मारिया सम फ्लावर्स। ही कुक डिनर फॉर हिज फैमिली एवरी नाइट। He cooks his family dinner every night. He cooks his family dinner every night. She held a seat for his friend. She held a friend a seat at the concert. ये अब आप याद करेंगे, याद करें, याद करें, याद करें, याद करें, याद करें, याद 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 याद, ये आप अपनी जिंदगी में याद करेंगे। 2 दिन में याद नहीं करना, मैंने आपको सिर्फ डाटा जमा करके दे दिया है ताकि आपकी नॉलेज में रहे। फिर आपको एक एक्सरसाइज दे दी है, जब आप सब पढ़ ले तो एक एक्सरसाइज सॉल्व कर लीजिएगा। मैं आपका एक टेस्ट भी लूंगा आज, टू और फॉर का, ठीक है। आंसर्स भी अवेलेबल होते हैं मेरे एक्सरसाइज के, ये नोट्स आपके पास आ चुके हैं। मेरी आज की आखिरी बात, सर एक बात बताइए। जी पूछिए। आपने सबसे पहली बात कही कि हम ऑब्जेक्ट के बगैर जुमला बना सकते हैं। जी बिल्कुल, मैंने ऐसा कहा। फिर आपने हमसे उससे पहले कहा कि हम एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जी मैंने कहा। फिर आपने अब तीसरी बात कही कि अब हम एक सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट्स लगाते हैं। सर ये कौन है ऑब्जेक्ट के पीछे, ये तो आप खुद बताइए। ऑब्जेक्ट के पीछे कौन होता है? ऑब्जेक्ट के पीछे कौन होता है? ऑब्जेक्ट के पीछे कौन होता है? सो गए। Verb. वर्ब। वर्ब। वर्ब, मैं कहा शायद मेरी लोरी काम आ गई है। ऑब्जेक्ट के पीछे वर्ब होता है। अच्छा, ये जो वर्ब है, अब ये वर्ब आपको बताएगा कि मेरे बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, मेरे बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा। अगर मेरे बाद ऑब्जेक्ट लगेगा तो वो 1 होगा या 2 होगा, ये कौन बताएगा? ये वर्ब बताएगा। वर्ब कौन सा वर्ब बताता है? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद या तो एक ऑब्जेक्ट लेते हैं या फिर 2 ऑब्जेक्ट्स लेते हैं। जरा देखिएगा, वर्ब वी एन लिखा हुआ है, वर्ब फॉलोड बाय सिंगल ऑब्जेक्ट। अगर वी डबल एन लिखा हुआ है तो वर्ब फॉलोड बाय डबल ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आप किसी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगाते या नहीं लगा सकते तो उस वर्ब को आप कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेते, तो फिर क्या लेते हैं? एडजेक्टिव ले लेते हैं, प्रेपोजिशन ले लेते हैं, एडवर्ब ले लेते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं लेते। ऑब्जेक्ट नहीं लेते। आइए एक जनरल नॉलेज की बात फिर आगे चलता हूं। बचपन में आप लोगों ने, स्कूल लाइफ में आप लोगों ने पैसिव पढ़ा था। बताइए पैसिव में सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं? पैसिव में हम सबसे पहला काम क्या करते हैं? बताइए। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। अगर हमारे पास कोई इंट्रांजिटिव वर्ब है, अगर हमारे पास कोई इंट्रांजिटिव वर्ब है तो बताइए हम क्या करेंगे? पैसिव नहीं बनेगा। पैसिव नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट ही नहीं है, और जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव नहीं है। ऑब्जेक्ट होगा तो हम पैसिव बनाते हैं, लेकिन जब इंट्रांजिटिव वर्ब्स का हम इस्तेमाल करते हैं तो हम वहां पर पैसिव नहीं बना सकते, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो क्या होता है? सवाल था, एडजेक्टिव होता है, प्रेपोजिशन होता है, एडवर्ब होता है। मैंने 3 जुमले लिखे थे, मैंने बहुत सारे जुमले आपके लिए लिख कर रखे हैं। ये तो ट्रांजिटिव वर्ब है, इन सब के बाद आपको ऑब्जेक्ट नजर आएगा। देखें, शी आस्क हिम अ क्वेश्चन, प्लीज ब्रिंग मी द बुक, आई बॉट अ न्यू लैपटॉप। सब में ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है ना? ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है। द प्रोजेक्ट कॉस्ट $1,000 सब में आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये सारे मैंने कौन से वर्ब्स लिखे हैं?
ट्रांजिटिव वर्ब्स। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब देखें, मैंने आपसे कहा था वर्ब ऑफ मूवमेंट, तो आपको देखें अराइव नजर आ रहा है, गो नजर आ रहा है, अभी आगे चलेंगे तो शायद रीच भी नजर आ जाए, फ्लाई भी नजर आ जाए। अब आप इन इन वर्ब्स के बाद देखें, शी अराइव्ड अर्ली, क्या दिखा, क्या दिखा, एडवर्ब, टाइम एक्सप्रेशन है ना, अर्ली। द बेबी स्लीप साउंडली, क्या दिखा, क्या दिखा, वर्ब के बाद द बेबी स्लीप्स साउंडली, क्या दिखा, एडवर्ब, एलवाई लगा हुआ है। एडवर्ब। दे लाव लाउडली, फिर क्या दिखा, एडवर्ब। वी मस्ट एडवर्ब। गो, वी मस्ट गो नाउ, गो इज अ वर्ब ऑफ मूवमेंट, और उसके बाद नाउ टाइम एक्सप्रेशन आ रहा है। ही लाइज ऑन द बीच। अच्छा अब देखो, मैंने क्या कहा था, वर्ब के फौरन बाद क्या आ गया, preposition। प्लीज सिट हियर, एडवर्ब। दे स्टूड बाय, स्टूड के बाद क्या आ गया, स्टूड के बाद क्या आ गया, बाय, Preposition. preposition। द चाइल्ड क्राइड ऑल नाइट, फिर आपके पास एडवर्ब आ गया। यानी कि देखो, जितने भी तुम्हें सेंटेंस यहां पर दिखेंगे, उन सब के बाद तुम्हें क्या दिखेगा, preposition। सिर्फ वर्ब के बाद कुछ नहीं दिखेगा, preposition, 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 adverb, preposition, adverb, 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 preposition, preposition, preposition। देख लो, जितने भी इंट्रांजिटिव वर्ब्स आपको दिखेंगे, जितने भी इंट्रांजिटिव वर्ब्स आपको दिखेंगे, उन सब के बाद या तो एडजेक्टिव होगा, अगर वो स्टेटिव वर्ब्स में होता है, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, preposition होगा। अब देखो, कम से कम एक लिस्ट मिल गई, कल को बैठ के कुछ रिवाइज कर रहे होगे तो पढ़ने के लिए कुछ मिलेगा तो ना। मैं सिर्फ बता दूं और फिर आपके पास डेटा ना हो, फिर आपने अच्छा इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, अब आपके पास इतना डेटा आ गया कि कल को अगर आप किसी लैंग्वेज एकेडमी में जाकर पढ़ा रहे हैं तो ये नोट्स आपको बड़े हेल्प करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे। यू कैन बिकम अ वेरी गुड लैंग्वेज टीचर बाय यूजिंग दीज नोट्स। और फिर एक वक्त आएगा आप अपने नोट्स क्रिएट कर लीजिएगा। गॉट इट? एनी क्वेश्चन? कोई ऐसी बात जो आज के सेशन में आपको समझ आई हो? कोई ऐसी बात जो आज के सेशन में आपको समझ आई हो? सारा कुछ समझ आ रहा है। दैट्स वेरी गुड सर। अगले सेशन में आप क्या पढ़ाएंगे? मेरा आपके साथ 2 सेशंस होते हैं, मंडे और ट्यूसडे में आपके 2 दिन ग्रामर के सेशंस कंडक्ट करता हूँ, और वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे में आप लोगों के सेशंस लेता हूँ 1-to-1 डिस्कशन। अब एक बात याद रखें, एक बात याद रखें कि आप लोग, मैंने कल सुबह आज बता दिया बच्चों को, मैंने कल रात में भी बता दिया था, दोपहर वाली क्लास रह गई। बेटा एक बात जहन में रखें, हमारे पास 2 सेशंस होते हैं, एक अभी आपकी डिस्कशन क्लास स्टार्ट हो रही है और एक आपकी स्पोकन क्लास होती है। इन 2 क्लासेस के अंदर आपका जो टॉक टाइम होता है वो 2 मिनट होता है। अच्छा, आप किसी भी लैंग्वेज एकेडमी में चले जाएं, अगर आप ये कहते ना हमें तो 2 मिनट बोलने का मौका मिल रहा है, आप किसी भी लैंग्वेज एकेडमी में चले जाइए। आप अगर मेरी लैंग्वेज एकेडमी में आते 2016 में, तो मेरी क्लास में तो 60 बच्चे बैठे होते थे, और उन 60 बच्चों को जब स्पोकन क्लास में भेजते थे 1 घंटे के लिए, तो हार्डली अगर हर कोई बोलेगा तो 2 मिनट में, टीचर भी बोलेगा तो सबका टॉक टाइम, मैं कहता हूँ एवरेज टॉक टाइम शायद 90 सेकेंड्स होता होगा, नॉट मोर देन दिस। आपका टॉक टाइम ज्यादा से ज्यादा स्पोकन क्लास में और डिस्कशन क्लास में कितना होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मिनट, नॉट मोर देन दिस। अगर क्लास में 20 बच्चे हैं, 2-3 मिनट्स। आप लोग कहते हैं भाई ये तो बहुत कम टाइम है। आपको पता ही नहीं है कि इस क्लास में आपको करनी है लिसनिंग। आपको लगता है कि ये सेशन मैंने आपको बोलने के लिए दिया हुआ है। बहनों और भाइयों, ये सेशन मैंने आपको सुनने के लिए दिया है।
कि आप लोगों को सुने। आप जब 40 मिनट 50 मिनट सुनते हैं ना, तो सुनने से आप क्या करते हैं? आप सीखते हैं। यू हैव बीन लिसनिंग टू मी, you have been listening to me, and what you are actually doing, you are learning. Listening is learning. आप वोकेबलरी को सीखते हैं, आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को इंप्रूव करते हैं। और ये जो 2 मिनट आप बोलते हैं ना, ये बेसिकली आपका एक टेस्ट होता है कि मैं बोल सकती हूं या नहीं बोल सकती। और अगर आप बोल सकते हो उस टॉपिक पे, बहुत अच्छी बात है। और कुछ बच्चे जो नहीं बोल सकते, वो 10 लोगों को सुने, उसके 11वें नंबर पे वो बोलना शुरू कर देते हैं। और जो क्लास मैं आपको देता हूं नॉन स्टॉप बोलने के लिए, वो क्लास कौन सी है? वो क्लास है आपकी 1-to-1 डिस्कशन, जो कल होगी आपकी मेरे साथ 1-to-1 डिस्कशन। इसमें आप नॉन स्टॉप बोले, जितना बोलना है बोलिए। और ये क्लास होती है वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, दिन में 3 मरतबा। इसमें आप नॉन स्टॉप बोलते हैं, 1 घंटे का सेशन होता है, एक पार्टनर आपके साथ होता है, बोलिए जितना बोलना है। लेकिन इस क्लास में गलती कर रहे हैं आप लोग, डिस्कशन क्लास में अपनी बारी नहीं चले गए, तो आपने तो कुछ सीखा ही नहीं। फिर आप कंप्लेन करेंगे हमारी तो स्पोकन इम्प्रूव ही नहीं हुई है। स्पोकन इम्प्रूव होती है लिसनिंग से। डिस्कशन फ्लुएंसी आती है सुनने से। आप सुनेंगे तो आप सीखेंगे, और उसके बाद आप टेस्ट देंगे। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आप अपने आप को टेस्ट किया करें, ठीक है? तो डिस्कशन क्लास और स्पोकन क्लास में आपको सुनने को मांगता है। आप ज्यादा से ज्यादा सुने और पार्टिसिपेशन लाजमी दें, ठीक है? अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओवर टू मिस फर। Thank you, sir. Assalamu alaikum, students. वालेकुम सलाम। How are you all, students? Yeah, अल्हम्दुलिल्लाह। good, ma'am. What about you? How about you? I'm great. Thanks for asking. Yes, students. How's your morning? It was very good, ma'am. We enjoy a lot. It was very beneficial. Yeah, good. Mashallah, mashallah. That's great. And how was your grammar class? It was very good, but very occasional. Okay, okay. That's great. That's really nice. And what about the weather? How's the weather today? It's Weather sunny is here. even, ma'am. It is a sunny day. Okay. Okay. That's great. Okay, students. So let's start today's class. So today we are gonna start our class with tongue twister. So yes, students, listen to me very carefully. Then you have to go twicely. Once in a like once you have to go with slowly version, and secondly you have to go with the fast version. Okay. So let's start. How much would chuck if a woodchuck could chuck wood? Okay, in American accent, we are supposed to, whenever we have W-O, so we are supposed to use not wood. We used to say rude. Okay, rude. So, how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? He would chuck wood as much as he could and chuck as much wood as if as a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. Okay, students, listen to me very carefully again. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? He would chuck wood as much as he could and chuck as much wood as a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. So yes, students, now it's your turn. So once you have to go slowly and second time you have to go in a fast version. So yes, students, make up your minds and raise your hands. Yes, students, go ahead, dear. Okay, yes, Sadia, unmute yourself, dear. I'm hearing Yazan. Yeah, it's the azan is being called over there. So okay, just wait for 2 minutes. Yeah.
Okay, Sadia, wait, I'll give the chance to Nilofer. Okay, then I'll be back to you. Yes, Nilofer, unmute yourself. Assalamu alaikum, ma'am. How are you? Walaikum assalam, dear. I'm great. Thanks for asking. How are you, dear? I am also fine, ma'am. Okay, dear. Yes, go ahead. Okay, ma'am. How much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? He would chuck he would as much as he could and chuck as much wood as a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. Okay, second time, dear. Okay, ma'am. How much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? He would as much as he could and chuck as much wood. As a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. Okay, not bad. Well tried, dear. Good try. Keep it up, dear. Okay, dear, Thank you. we use that is a, not a. If a woodchuck. See, there is how that looks really nice. It's really nice to listen that when we use the word a as a. Okay, we are not supposed to go with a. If a woodchuck, okay, as a woodchuck would, if a woodchuck could chuck wood, okay, so you have to go with Okay, a. ma'am. Okay, Okay, ma'am. As a woodchuck. No, ma'am. As a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. yeah, exactly. Well tried, dear. Okay, move on to Okay. Sadia. Yeah. Okay, Hello. yes, Sadia, dear. All right. How much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? He would chuck he would as much as he could and chuck as much wood as a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. Uh, how much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? He would chuck he would as much as he could chuck as much as wood as a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. That's amazing, dear. Very Teacher, good, very I good. normally use not a. Sorry, come again, dear. Sadia, you are not audible to me, dear. Yes, students, what you Ma'am, said. I have done it. Ma'am, she said that normally we used not a. That was her question. But over here in the American accent, we are supposed to go with A, and it looks really nice when you pronounce it as a A. Okay? Yeah, I follow you. That's why. Okay. Okay, well tried here. Okay, move on to yes, Saman Fatima. You're welcome, dear. You did really well. Okay, yes, Saman Fatima. Yes, ma'am. Yes, Saman Fatima. Go ahead, dear. Would how would woodchuck would if a woodchuck am I audible? Yes, dear. Now No, you are ma'am. audible. Your voice is breaking. Okay, students, let me know, is she, her voice is breaking or it's mine voice is breaking? Actually, now her voice is breaking for us as well. Yeah, okay. Okay, yes, Saman Fatima, go ahead, dear, again. Okay. Would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? He would
would chuck, he would as much as he. Okay, Saman Fatima, well tried here. Actually, your voice is continuously breaking, so I'm not getting you clearly. But what I got, so yeah, that will be okay. Good try, dear. Okay, yes, Sayyida Hafiza, dear, unmute yourself. Yeah, ma'am. Yep. I'm good to go. Yeah. Um, how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? He would chuck. He would as much as he could and chuck as much wood as a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. Okay, let me try it again. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? He would as much as he could and chuck as much wood. As a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. So yeah, I'll try it again, inshallah. Later. Okay. Yeah, that's amazing. That's really nice. Sayyida, you're really like fluent today, mashallah. That's great. Thank Keep it up, you. dear. You're welcome. Yes, Baby Hina. Yes, ma'am. How much would a woodchuck chuck? If a woodchuck could chuck wood, he would chuck he would as much as he could and chuck as much wood as a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. I've Yes. done, ma'am. Second time, dear. Okay. How much wood would a woodchuck if a woodchuck could chuck wood? He would as much as he could and chuck as much wood as a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. Okay, that's great. Good try, Baby Hina. Keep it up, dear. Thank you, Okay, yes. ma'am. You're welcome, dear. Yes, Alishba. Yes, Alishba, unmute yourself, dear. Alishba. Alishba, kindly unmute. Walaikum assalam, dear. Yes, dear. How much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? How much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? He would as much as he could and chuck as much wood. He would as much as he could and chuck as much wood. As a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. As a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. Okay, a good try, dear. Keep it up, dear Alishba. Okay, move on to Maham. Yes, ma'am. Yes, dear. How much would you like? Would chuck if I would chuck could chuck wood. He would as much as could, and chuck as much wood as a would chuck would if I without would chuck could chuck wood. Yeah, go with the second time. Okay. How much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? He would as much as he could and chuck as much wood as a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. Okay, that's really nice. But the word is chuck. It's not chuk. Okay, sorry. Yeah, it's chuck. So overall, very good. You really have a good fluency, dear. Keep it up, dear. Thank you. You're welcome. Okay, yes, move on to Nimra Hanif. Assalamu alaikum. Walaikum assalam, dear. Yes, dear. How much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? He would as much as he could and chuck as much wood as a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. Let's try faster. How much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? He would as much as he could and chuck as much wood as a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. Okay, that's nice, Nimra. Very good, dear. Keep it up, dear. Okay, move on to Malik Ehsan. Yeah, ma'am. Yes, How much wood would a woodchuck if a woodchuck could chuck wood?
He would chuck he would as much he could and chuck as much wood. As a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. Second time. He much would a woodchuck if a woodchuck could chuck wood. He would as much he could chuck and chuck as much wood. As a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. That's really nice. Very good, dear. Okay, the first word of first sentence, that is like how much. Okay, not he much. How much. Overall, very good, dear. Okay, Thank move you, on ma'am. to. You're welcome. Yes, Gul. Yes, Gul, unmute yourself, dear. Yes, Gul, unmute yourself. मैम आसान हो रही है Okay, dear. Yes, students, anyone else who want to go with the tongue twister? Yes, Kainat, Saika, Saman, Zubair, Dr. Aksa. Yes, students, anyone of you? यस मैम मैंने अभी ज्वाइन किया है तो मैं देख रही हूँ कि क्या टॉपिक है Okay, okay, we are doing the tongue twister. Okay? जी 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 मैम So, Assalamualaikum. okay. It is my second class. Okay, yes, Dr. Aksa. Yes, ma'am. It's my second class. So it's okay, it's really okay. Either it's your first or second class, but you have to go with it. So if you're not gonna go with it, so how you will improve? So it's really okay. So go ahead, dear, if you want to give a try. Yeah, ma'am. I can try. I speak. Yeah, go ahead, dear. How much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? He would chuck he would as much as he could, and a chuck as much wood as a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. Yes. Yeah, go with the second time, dear. How much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? He would chuck he would as much as he could as he would chuck he would as much as he could, and a chuck as much as wood as a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. Okay, that's really nice. You did well, dear. Give it up, dear. Thank you, ma'am. Thank you. Okay, yes, Gul. Yes, Gul, are you there now? Yes, ma'am. Go ahead, dear. How much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? He would chuck he would as much as he could and chuck as much wood as a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. Yeah, that's nice, dear. Go with How much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? He would chuck he would as much as he could and chuck as much wood as a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. Okay, that's really nice. Very good, Gul. Keep it up, dear. Okay, Kainat, now you got an idea that how you have to pronounce the words and how you have to go with the tongue twister. So you can give a try, dear. Yes, Kainat. Okay, students, if you're not willing to go with that, so let's move on to the topic of the day because we have limited time. So yeah, today we have a topic of the day and we have different questions. So let's see the questions what we have. What is your favorite sports to watch? What was your favorite subject in school? What is your favorite TV show? What is your favorite website? What is your favorite season and why? So these are the questions, and obviously, as you know, that whenever we have WH questions or double interrogative questions, at that moment you just have to elaborate a little bit more than the interrogative questions. So you just have to elaborate your answers like a little bit, not that
You have to explain for 2 or 3 minutes. No, you just have to explain it a little bit more. So yeah, these are the questions. So according to you, you have to explain these answers. Okay. Okay, Kainat, it's okay. So do you want to give a try? If you want to give a try, so I'll give you the chance here. Okay, students, I'm going to clear all the feedbacks. So those who are really interested to just participate with the topic of the day, so they can raise their hands. And yes, Kaina, do you want to give a try to the tongue twister? यस मैम मैम बस इसकी रीडिंग करनी है ना. Yeah, just you have to read out it. Yeah. How much would a woodchuck chunk if a woodchuck could chunk wood? He would chunk he would as much as he could and chunk as much wood as a woodchuck would if a woodchuck could chunk wood. Okay. So here the word is chuck, not chunk. It's not a chunk, it's अच्छा chuck. चक. Yeah, ठीक है. woodchuck. Okay, dear. Okay. Students, so go ahead and raise your hands for topic of the day. Okay, yes, Nilofer, unmute yourself, dear. Okay, yes, Okay, ma'am. Nilofer. What Okay, is ma'am. your favorite to watch? Ma'am, my favorite is favorite sport is cricket. I love to watch cricket with my nephews, and sometimes on weekend I watch with my cousins, and I really enjoy the cricket so much. And mostly I like to watch some thrill matches between Pakistan and India. I really love to watch cricket between Pakistan and India, and I enjoy a lot when Pakistani team win the match. I really enjoy. Yeah, that is Uh, always an adventure for everyone. Yeah. yeah, ma'am. Okay. So what was your Yes, now, second question. What was your favorite subject in school? When I was in school, my favorite subject is mathematics because I'm very expert to solve questions by using different type of formulas, and I understand maths easily, and it is the easy subject for me. Therefore, I really like maths, and now I also like maths because I am teaching maths. I'm a teacher at a private school, and I also teach to my maths to my student. Okay. So what is your favorite TV show? My favorite mostly, ma'am, I watch different type of shows on TV, but the most favorite TV show is the morning show with Nida, because she invite different type of celebrities every day, and she discuss different type of informative things with those celebrities. Therefore, I really like to watch a Nida a morning show with Nida. And Okay. What is your favorite website? main website means Facebook, WhatsApp, YouTube. These are websites, na? Yeah, you can call it website because you can open it on websites as well. Yeah. Yeah, ma'am. My favorite website is YouTube, ma'am. Because I search different type of information on the YouTube. For example, I'm very interested in making different type of foods. Therefore, every day I try to search new recipes on YouTube, and I also like to search some fashionable sewing. I like sewing, ma'am. I'm a tailor also. Therefore, I every day I watch some new videos on YouTube. Therefore, my favorite website is YouTube.
And last question is, what is your favorite season and why? Ma'am, in my favorite season is summer, because in my area summer is very beautiful, and the weather is weather is warm. And during I like summer season because during summer season, we have a lot of work in fields, as well as my area is popular for apricots. During this summer season, we dry the apricots a lot with our family members as well as some relatives and my cousin. We together dry a lot of apricots, and we enjoy a lot by working in our field as well as at our home. Therefore, I like the summer season so much, man. Okay, okay, that's really nice, Nilofer. That's really great to listen you, dear. Very well done, and keep it up, dear. Okay, Thank you, ma'am. students. How I spoke, ma'am? My sentences are right, my grammar. Yeah, your sentences are correct. Yeah, but I want to tell you, whenever you have the question in past, for example, what was your favorite subject in school? So you answered like my favorite subject is math. Like when Oh, I was sorry. Yeah, yeah, my yeah, favorite subject is math. So yeah. yeah, Okay, obviously ma'am. question in past tense, so you have to go with the past tense. Your answer will be in the past tense. Okay. So if Okay, you have a ma'am. Okay. obviously you have to go with the present tense answer. So yes, Okay. Nilofer, dear, keep it up, dear. Thank you so much, ma'am. You're welcome, dear. Okay, students, those who want to tell about their favorite websites, so they can tell about the favorite websites, and those who want to go with the favorite app, so they can also share that. Okay. So yeah, move on to Malik Hassan. Yes, Malik Hassan, unmute yourself. Okay. So move on to Nilofer. Yes, Nilofer, unmute yourself, dear. Ma'am, I have done. Sorry. Yes, Doctor. Don't worry, ma'am. Yeah. Yes, Dr. Aksa, unmute yourself, dear. Yes, ma'am. Okay, yes, dear, tell me sport to Yes, watch. ma'am. Yes, ma'am. My favorite sport to watch is cricket, uh, because somehow that isn't that my younger brother was interested, so much interested in cricket, and we are forcefully to be watched, and then we also have an interested in cricket, and now I like to watch cricket. And my favorite subject in school, my favorite subject in school was biology, because it's all about living things, about humans, and I like to know about living things, and inside their physiology, their anatomy. And my TV show, favorite TV show, actually we don't have an so much time to watch the TV shows, but sometimes I would like to watch TV shows like Mazakrat with Imran Ashraf, that mm, would likely to be watched. In this, there is some portion of music, some question answers, and some poetry also. And my favorite website is an Instagram, and because we scroll reels, and I followed the medical space, many medical spaces, and in this, we can watch our sad realities and memes for our doctors and our field, and mm, we can happy to see this. And my favorite season is spring season, and because in spring season there is no much hot and cold, rather you can work easily, you can comfortable in your work, and if you sound flowers blooming all over around us, and we can happy to see all our environment that is much clear, and we can go anywhere without any type of packing that that's like in summer and that's like in winter. So that's why spring is my favorite season.
Yeah, exactly. I do agree with that. Whenever there is a winter season and you've planned some kind of vacation, so obviously you have to go with a lot of dresses, like the inners and the jackets and the like sweaters and a lot of like a lot of warm clothes. So, yeah, so I do agree with that. Okay, so what kind of you tell the sports like that you love cricket. So who's your favorite team? Um, always themed that our team would win, and with the match of India, that's the most interesting one for I think all of us. That is most interesting thing. And we paid a lot, and we have many inspiration in us that may Pakistan win, and prayed to Allah that and this type of excitement in such to watch mm, cricket, and those maybe we understand cricket as well, not like rather than football or tennis. So maybe that's why that we can understand well, that we have Yeah, knowledge about. yeah, that's true. Like at that moment, like everyone is so like everyone is so excited and enthusiastic at that moment. Like that is a kind of a thrilled moment, especially when there is a match between India and Pakistan. So yeah, it happens with everyone. Like with all the Pakistanis, it happens. Yeah, Okay, okay. but we have not so much knowledge about football and tennis, about the or some other sports, and we know all about cricket, how much Okay. it kind of play. Great. Okay, you really have a great knowledge about the sports. So very nice to hear. You did really well. Keep it up, dear Dr. Aksa. Thank you, ma'am. Thank you. Welcome. Okay, move on to Sayyida Hafiza. Yes, ma'am. Yes, Hafiza, dear. Dear, tell me what is your favorite sport to watch? Uh, as Nilofer said, and we already relate about my favorite sport. Yeah, we all like cricket, so I also like cricket because actually, it's the most popular in our country, popular sport. But it's something like, as we know that hockey is the actually national sport, but I don't know why like cricket is most popular. Okay, the reason is like it's always exciting, like especially when we play against India. You know, at that time, like every Pakistani feels like thrilled and hopeful as well. Like at the same time, they are all hopeful as well. And as far as I see, my family and people not only watch the match with full excitement, but also pray for the team's victory. Like yalla, yalla, please, yalla, yalla. That the way they are like, oh my god, I think I couldn't find this kind of taqwa in actual. Like, oh my God. So yeah, that's why it's always excitement and the energy, the passion and unity during such matches are amazing to see. So yeah, that's why I like cricket. I also the commentary with it. Actually, I think so that the Pakistani people they always see Indians as an enemy, and there is always a do or die situation over there whenever we have that match. So yeah, like we have like Australian and like there are a lot of like different cricketers we have. But whenever we have the situation between the or the match between the Pakistan and the India, that is really a kind of do or die situation. Seriously. So I have, Yes, yeah, I think so. They saw them as an enemy. So that is the yeah. reason. And some people Yeah. watch like they are actually playing. They said, "Oh, he did not catch. Actually, he did not know." Sometimes they act like that. Oh my God! If you know how to play, so why are you here? Okay, Yeah. anyhow. Hmm. Okay, okay. Dear, tell me what is your favorite subject in school? My favorite subject actually, I like both English and math. Both are my favorite subject. As like in English, I always take English not as a subject, actually a language. So I fond of learning new things, new languages. So that's why I like learning English.
actually reading interesting stories, and still I read novels, like English novels. So that's why English is my favorite subject. And it has improved your communication and you boosts your confidence as well. So yeah, that's why. And about math, this is something different for me. It's not a subject actually. Yeah, I love to learn. The best part is that you don't have to memorize everything in math actually. You don't have to cramming like all these kinds. Once you understand the concept, you just apply the formula. That's the thing I like most. And if you apply the formula and problem gets solved easily. So yeah, that's why I like maths. And Okay. it's like solving a puzzle, and that's what makes it so fun. So I always like to play like a puzzle. Am I audible? Yeah, I'm listening you, dear. I'm listening you. Okay, Okay. okay. Alright. Yeah. Okay. Mhm. So, what's your favorite TV show? TV show, I think all guys will be relate maybe with me. Like when I was younger, I loved watching princess cartoons. I don't know why. I just think that if Cinderella is playing some roles, I was like, oh, I am Cinderella, and if all these things happens with me, so what will I do? What would I do? What should I do? And all these things. So yeah, princess cartoon were my favorite cartoons. They were colorful and something magical, and I think full of exciting adventures. And sometimes, yeah, that's why. There are emotions actually. Princess cartoon. It means that you really like the imaginary world. Yeah. Yes, you remember. Okay. And as of now I'm not younger, so yeah. But now I enjoy watching Quranic competition shows nowadays actually. They inspire me, motivate me to improve my Quranic skills, and to improve like the way I recite the Holy Quran, Quranic Qiraat, and that's all show how like it was like how beautifully people from around the world recite and memorize the Quran. And the thing which is most favorite is every Qari had its own distinct level. How he or she reads the Quran, it's very melodious and so peaceful way. I love to learn. I love to listening Kirat. Yeah, that's my favorite show. And as I'm Quran competitor as well, I also enroll so many Quran competitions. So yeah, that's why maybe I'm love. I think I'm fond of it. Maybe that's why. Okay. Okay. So, what is your favorite website or app? Yeah, as far as favorite website, I think I like all informational websites where I can learn new things, whether it's about general knowledge, Islamic studies, or interesting facts. So I like informational websites. But there are so many apps which is most favorite to me. Like I'm as we like Instagram, but yeah, I would go with WhatsApp and YouTube. Okay, actually, my questions are not short. That's why when I started starting saying something, so I did not stop. So that's why I'm trying to be a kind of girl like limited answers. So I'm trying. So yeah, that's Yeah. it. All information websites. I know there are a lot of participants out there. They also want to Yep. participate. So yeah. The last question is, what is your favorite season and why? My favorite thing it couldn't be short actually because two both are my favorites season, spring and winter both are. Spring is my like one of my favorite because it's a season of fresh beginning. Like, the we all know the flowers bloom, the weather is brilliant, and everything looks like colorful and lovely. I think so. I feel very happy during spring. Something I feel like it feels like everything gets a new life. We all know that what's happened in autumn. Even the trees seemed autumn makes me feel a little sad because of all the what should I say, like because of the falling leaves. Actually, I don't like autumn, and it feels like nature is losing something. So, but once spring arrives again, it brings me so much joy to see everything comes back to life. So there is a lesson as well to us that we should learn from it, that we should not don't ever lose your hope. Allah is always with us. So yeah, that's why spring is one of my favorite season.
it make me joy just because like I just feel that everything comes big to life. So that's why. And Yeah, about winter, yeah, I that's also enjoy winter as well. I don't know. There is this. Okay, maybe. All right. I also enjoy winter because of we all know that because of cozy vibes, like wearing warm clothes, enjoying hot drinks, and spending quality time with our family, comfortable environment. But it's like for girls, I think sometime now as I'm growing, so now I am feeling that winter is not good actually like when I was younger, I know that I didn't do any work like I don't know about home chores, how to do like. But now as I'm growing, so I have so many works to do about like home chores. So now I don't like winter when I washing when I wash like dishes and clothes. So I understand. Oh, this is not a good season actually. And spring is done. It's okay. It's enough for me. okay. Okay, that's really amazing, Sayeda. You did really well, and you spoke so well. But the time limit is 2 minutes. Okay, and you are speaking more than that. So, Now I'm trying. yeah, exactly. Okay, well, try, dear. Keep it up, dear. Okay, move on to Malik Hassan. Thank you. Yes, You're ma'am. welcome. Okay, Mr. Hassan, dear, tell me what is your favorite sport to watch? My favorite sport is sometimes my happiness. Want to make you happy. Come again, Mr. Can you speak a little louder? To watch is that snooker. Now is my voice clear? Yeah, now it's quite clear. Okay, so what was your favorite subject in school? Now my voice is clear. Yeah, it's clear to me now. I'm all yours. Yeah. My favorite sport to watch, I like to play snooker and as well as badminton, but not like to like a favorite but watching this sport thing because I think that it's a wasting of time. But when I like that championship trophy, to interesting thing like that, Pakistani player Mohammad Asif won a second time championship in snooker world. So I like to watch their match and learn techniques from the. That's why I watch most probably to sport uh, shows. Okay. Actually, you are fond of to playing that snooker, so that's why you love to watch only that. Okay. Yeah. So, so what was your favorite subject in school? Yeah, my favorite subject is math, and it's had a very dramatically relation with math. So let's to explain it. Yeah. At the primary level, then I first read in school is Medina Public, but it's not on a standard level. It's a normally when I moved to a new school is like Darerkam. It's a first school in our city, like that, and a good standard in and reputation in Pakistan. When I get their admission test, I failed in all subject, else math. So math saved me to my down my grade level from my when I shifted to Darerkam. I am on 3 class, but they set back me in second class instead of one due to I pass only in math. So math saved me to the grade one from my and it's an Okay. event and it's a coincidence. I score math in good marks, but it's same in ninth class as well as 10. Like that, out of 75, I score 62 in ninth class, but also in 10th class, Okay. Wow. That. and and in 11 also same, and like as well as 12. Okay. Okay. That's really great. That's really great. But one thing that you are really an honest person, you tell your story. So like you told your story, and like the truly you in a very true way you explain that story. There is no anything like that. Some of the time, students are supposed to Yes, ma'am. share their own stories. Like these kinds of
stories when they got killed or like that. So yeah. Okay. Yeah. What is show? My favorite show is watching a funny clip like that, Hasna Mana, and Pakistani state drama shows, and also like the Kapil Sharma uh, show. So watching on a most probably that then on daily routine. After watching this, I get them player and charming. So that's why I watch. Favorite show is funny show. Okay. Which So what is your favorite website or app? when after seeing the question of topic of the 2 days, I am stuck on the website. What I tell you but I most probably use the website. But nowadays, the common is AI chatbot. They can be assist me in any problem and can help me to getting more easily, and they explain my every situation. So nowadays I watch visit website is chat AI bot like that, Meta AI, Chat GPT, and in any other sense. Okay, okay, that's nice. Okay, so the last question is, what is your favorite season and why? My favorite season is winter, and is like to this because of the seasonal foods. Like in winter, we make many desi foods like that. Is in Punjabi, Panjiri. Because of these things are made in only winter, and it's also eatable in this season. So I like also is smoke in winter, and the winter dressing, because in Pakistan we cannot dress up in summer season. So I like to in dressing in uh, winter. That's why I like winter season. Okay, 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 that's great, Mr. Malik. So that's really amazing to listen to. And I do agree with that. Like, yeah, if you're a foodie person, so you obviously you really enjoyed foods in winter. So yeah, very good here. Keep it up, dear. Okay, move on to Nimra. Yes, Nimra Hanif. Yes, Nimra. Okay. Yes, can I speak? Yes, Nimra, dear. Nimra, dear, tell me what is your favorite sport to watch? If you ask me my favorite sport, then my favorite sport to watch is cricket, because it brings excitement when we unite to watch big tournaments like T20 and World Cups. So that's why I love to enjoy it with my cousins and family to watch cricket. Okay. So what was your favorite subject in school? My favorite subject was mathematics, because I love to solve problems and finding logical solutions, as well as my father is also a teacher, so he often taught me maths, and that's why I feel interested, and it is very easy for me to go for maths. Okay. So what is your favorite TV show? As I don't watch TV show often, but yeah, you can say Omar series was my favorite, because I learn Islamic history and valuable series. I love it to watch often if I feel very bored. Okay. So what is your favorite website or app? If I talk about favorite website, then it's my Islamka, as Islam QA is favorite because I can learn everything from that related to Islamic knowledge and also to various questions. And if I talk about the favorite app, then it is Instagram, because whenever I free, I feel love to watch reels at Instagram, and I love that's why. Okay. So what is your favorite season and why? Favorite season. I have two favorite season. One of the favorite season is the monsoon, because I love the refreshing rain. I love rain as it may brings cool atmosphere and makes everything feel vibrant and alive. As well as second one is spring,
it also make refreshing, and it brings hope to me, and everything is blooming. That's why. Okay, that's really amazing, dear. That's really great to listen to you. Very well done and well tried. Keep it up, dear. Okay, move on to Alishba. Yes, Alishba, unmute yourself, dear. Yes, students, hurry up. Unmute yourself, Alishba. Assalamualaikum. Yes, Alishba. Am I audible, dear? Yes, ma'am. Okay. My favorite sport is badminton. I really like to play badminton with my cousins or sisters or friends, and it is just is very helpful for our health, or it's just like an exercise. So it's my favorite sport, or indoor or outdoor. It's an Okay, amazing outdoor game or sport. And my favorite subject when I am in school, I was in my school. It's uh, art subject, because I really like to do painting, sketching, or making a project, and to do coloring. So that's why I like an art subject. And my favorite TV shows is just to watch dramas, Pakistani dramas. Uh, and my favorite app is Instagram, because it is very interesting app for reels, or to watch informative things, or just know about celebrities. And my favorite season is spring season, because it is a very peaceful and lovely season. So that's why I really enjoy in the spring season. There is very greenery. Well, try and you did really well. Thank you. You're welcome, dear. Okay, move on to Bibihina. Yes, ma'am. Okay, dear, tell me what sport to watch. I don't like any sport, but I like to play cricket and badminton with my husband and also with my sister and cousins. Okay. So, what was your favorite subject in school? When I was in school, my favorite subject was biology, because I love to learn about living things and also draw diagrams. That's why. Okay. So, what is your favorite TV show? Nowadays, my most favorite drama, Artur Ghazi and Usman Ghazi. These are my most favorite dramas. Okay. So, what is your favorite website or app? Website. My favorite app is Instagram and YouTube. That's it. Both are my favorite, because when I get free time, I watch movies and videos and recipes on YouTube, and also I use Instagram for any reels. That's it. Okay. So, what is your favorite season and why? Mm, uh, Spring season, because in spring season we can do everything, we can do every work very easily and very comfortably, because they in spring season. Mm, that's it, ma'am. Okay, that's great and well tried, Bibihina. Keep it up, dear. Thank you, ma'am. Okay, you're welcome, dear. Okay, students, so let's move on to the commonly used structures. So today we have a commonly used structure that is used to using.
actually we use this structure for the present habitual things. Okay, present repeated things or present habitual things, those things which are we are really familiar with. Okay, so this is our interrogative question. Okay, this is interrogative question. So let me tell you first that how you have to make the affirmative sentence of it, the positive sentence of it. Okay, so the structure is subject, then is, am, or. Okay, with, you have to go with used to and verb ing form. Okay, students, I just mentioned in the chat box the structure of the affirmative sentence, that is subject with is, am, or, and then you have to use used to structure, used to with verb ing form. Okay, this is for the present. Okay, for the present. So I think so that you guys did the past repeated action. You can call that past repeated action. There we never use is, am, are, that is directly subject with used to with base form of the verb. Okay, so don't get confused. Right now we are doing the present repeated action. So that is like the things that you are familiar or habitual. Okay, with those things. So at that moment you are supposed to subject with is, are, use with. Yes, ma'am, here is the question, ma'am. We are using this structure as a present, now in present or in past. This structure, okay, Nilofer, this structure we used in present. Okay, is, am, or, is we use. Let me clear you guys, then whatever you have question you can ask. Okay, so the thing is is we use with third person singular, for example he, she, it. Okay, with that subjects we use is, am we use with I, and are we use with the plural nouns, for example we, you, they, or any more than one thing, so with that. And the verb ing form you have to use at the end of the sentence, after used to you have to use verb ing form. For example, let's see over here we have the interrogative question, that is are you. Here we are using are. Okay, because of the subject of you. Okay, or because of you we are using are, because you we have the plural noun over here. Okay, so are you used to using chopsticks? क्या आप chopsticks use करने के आदी हैं? Getting my point, students? Why we are using this structure for the with? Okay, are you used to using chopstick? क्या आप chopsticks use करने के इस्तेमाल करने के आदी हैं? In the second sentence, are you used to live here? That is incorrect sentence. Okay, the question is, are you used to living here? क्या आप यहाँ रहने के आदी हैं? We are supposed to go with the verb ing form. We are not supposed to go with the any adjective or base form of the verb. We have to use over here ing form. So that is, are you used to living here? क्या आप यहाँ रहने के आदी हैं? And the third question is, are you used to staying up late? क्या आप रात को देर तक जगने के आदी हैं? Are you used to speaking English? क्या आप English बोलने के आदी हैं? Getting my point, students? This is a kind of a present progressive structure. Okay, are you, is he, is she? Okay, like that. If you want to make any positive sentence, for example, कि मैं chopstick इस्तेमाल करने की आदी हूँ, then how I make the sentence in the affirmative or the positive sentence? I am used to chopsticks. I am used to living here. I am used to staying up late.
I am used to speaking English. Getting my point, students? How you have to make the positive sentences? Yes, Sayyida Hafiza. Yes, ma'am. Are you used to waking up early in the morning? What are you doing? Sorry, ma'am, actually. Are you used to living away from your family? And are you used to eating spicy food? Are you used to traveling alone? Are you used to using a smartphone? Are you if I, okay, let's change the subject as well. Like, is she used to talking too much? Is she used to like? Is he used to wearing fancy dresses? Are they used to studying for long hours without getting tired? Yeah, and I'm used Dear. to speaking English. Hello. Yes, that's Uh, it. yeah, that's it. Yeah, there are Very two well. participants all there. Yeah, thank you. Yes, Hina. You're welcome, dear. Yes, Bibi Hina. Yes, ma'am. Are they used to driving a car? Is he used to waking up early in the morning? Is she used to wearing branded clothes? That's it, ma'am. Okay, very good, dear. Very good. Keep it up, dear. Thank you, ma'am. Okay. Yes, Nilofer, unmute yourself, dear. Okay, ma'am. Are they used to playing cricket? Is he used to living here? Are you used to making bread every morning? Are you used to running very fast in competition? Am I right, ma'am? Yes, you are, dear. Very good. Very good. You did really well. Keep it up, dear. Thank you so much, ma'am. You're welcome, dear. Yes, students. Anyone else who want to make the sentences? Yes, students. Yes, Gul, Ikra, Sadia, Saman. Anyone of you? Yes, Saman, Fatima. Yes, ma'am. Am I audible? Am I audible? You are, dear. Okay. Okay. Are you used to make breakfast? Ma'am, I wanted to ask why there is their second question. Are you used to life here? Why is there writing life? No, that is incorrect. That is mistyping. The Okay. sentence is used to living here. Okay. 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 Got it. Sentence you Are have you to use used make. making? Now I got the point. Okay. Are you used to making food? Is she used to eating biryani? Are they used to watching movie together? Yeah, that's it, dear. Is she Okay, yeah, continue. used to wear? Ma'am, there was a connectivity issue, so I can question these cue cards if there is any time left. Okay, okay. Should I start? Okay, let's the first sentences. Let me give the chance to Sadia as well. Okay, then I'll be back to you. Okay. Okay. Okay, yes, Sadia, dear, unmute yourself. All right, ma'am. She used to spend money on clothes.
He used to play kart. Is he used to pick special chocolates from straws? Is she used to play guitar? That's it. Dear, you have to use verb ing form. You're not supposed to go with base form of the verb. Okay. Yeah. Then I put in the is she using pick special chocolate from straws? Simple. Is she using to play guitar? She using to spend money on clothes. He using to play card. Actually, I'm also doing my office work. That's why. No, it's like you are supposed to go with is she used to playing cards? Is she used to cooking food or buying things or spending time like that? You have to use the verb ing form. You are not supposed to go simply with the base form of the verb, okay? All right. Yeah. So do you want to give a try? Give at least one sentence. No, ma'am. Actually, ma'am. Let me free from my emails so I can join you Sure. after 5 minutes. That will be okay. Okay, Sadia. Yes, Alishba. Yes, Alishba, unmute yourself, dear. Okay, ma'am. He used to speak truth. No, dear, that is incorrect. You are making the affirmative sentence. So that will be like, he is speaking. It will be like that. He used to speaking truth. He is. He is used to speaking truth. Ji, he is used to speaking truth. Yeah, that will be the. Are you used to wake up early in the morning? No, are you used to waking up early in the morning? You have to use verb ing form. Okay. After used to, you have to go with verb ing form. Like, are you used to waking up early in the morning? Are you used to sleeping early at night? Are you used to making something like that? Okay. Okay. Are you used to eating something spicy? Correct. Are you used to watching movie? Correct. Are you used to offering a namaz? Correct. Okay, that's it, ma'am. Okay, Alishba, very well done, dear. Keep it up, dear. Sorry, Saman Fatima, the time is almost over. We actually did a lot, almost the 7 minutes we did more. So if you don't mind, so inshallah, in the next session we'll give you time, okay? Okay, ma'am. No problem. Okay. So yes, students, you're welcome. So students, remember me in your prayers and see you in the next session. Take care and Allah Hafiz. Bye bye. Allah Hafiz, ma'am. Take Allah care. Hafiz.